We are doing October-November 2021, variant 1.1. A student makes aqueous copper 2 sulfate. Aqueous copper 2 sulfate means he's making a soluble salt. The student adds an excess of copper 2 oxide powder to a warm sulfuric acid and stir the mixture. Now, there are two ways of preparing the soluble salt. Number one, there is a neutralization reaction by performing the titration experiment. And there's another method where we add the excess of metal oxide or metal hydroxide, insoluble, any insoluble component to an acid, right? And we add an excess ताकि आपका जब completely acid neutralize हो जाए, consume हो जाए, तो जो excess of आपका insoluble component है उसको आप filter कर सकें. That's another way of preparing the soluble salt. So which apparatus could be used to separate the aqueous copper 2 sulfate from the excess of copper 2 oxide? Why are we adding excess of copper 2 oxide? So that we ensure that the sulfuric acid has been completely consumed. तो अब इन दोनों को soluble salt को और excess of copper 2 oxide को separate out करने का कैसे, how we are going to separate out the apparatus? We will be using the filter funnel and the filter paper. Because this is excess of copper 2 oxide is basically your insoluble and you're preparing a soluble salt. तो इन दोनों को remove करने का जो separate out करने का जो तरीका है, that's using the filter funnel and the filter paper. Question 2, a student follows the rate of reaction between the marble chips, calcium carbonate and hydrochloric acid. And this is the equation where the calcium carbonate and HCl react together to give you calcium chloride, carbon dioxide and water. Now they're asking which diagram, which setup shows the apparatus with the shows the apparatus that with the stopwatch is suitable for the experiment. ठीक है, तो आप against time कोई चीज measure कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि यहाँ पर तीन setups हैं. We have a setup 1, we have a setup 2, and we have the setup 3. So what are we doing against time? जहाँ पर आपकी need जो है वो stopwatch की है. ठीक है, so let's see the experiment 1. In the experiment 1, we have the marble chips and we have hydrochloric acid. So marble chips and HCl, when they react together, you get the carbon dioxide gas, and that particular gas, they're collecting over the water because this gas, carbon dioxide, is insoluble in water. So it's being collected in the measuring cylinder. Yes, we'll be collecting the gas against time. तभी आपको कोई भी चीज, कोई गैस या अगर उसका मास डिक्रीज हो रहा है या मास इंक्रीज हो रहा है या गैस अगेंस्ट टाइम, अगर आपका रेट बेसिकली क्या है, रेट इज बेसिकली द चेंज, rate is basically the change in, so rate of reaction, we have a formula we can define as it's a change in the amount of the reactant or the change in amount of a product over the time interval, change in time. उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, change delta concentration of reactant or change in the concentration of product over the time. अब इन सब experiments में, experiment 1, 2 and 3 में हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ rate किस किस के अंदर identify कर सकते हैं कि change in concentration और change in amount of reactant या product हम कहाँ पर monitor कर सकते हैं. ठीक है, against time. तो यहाँ पर yes, we can monitor we can collect the carbon dioxide gas in this against time. तो यहाँ पर we will be needing a stopwatch. Over here we can measure the decrease in the mass of the product. ठीक है, of the reactant. यहाँ पर आप डिक्रीज इन द मास ऑफ द रिएक्टेंट लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने कॉटन वूल लगाया जिसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पर पैटर्स नहीं है, तो यू लेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड escape out. तो यहाँ पर आप चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेक कर रहे हैं और यहाँ पर अगेंस्ट टाइम. और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप कुछ भी नहीं चेक कर रहे हैं. ठीक है, आपको रेट पता ही नहीं चल रहा क्योंकि आप चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं ओवर द टाइम रेंज. So that means हमारा experiment 1 and 2 only, we will be needing a stopwatch, and the answer to this particular question is basically B. Question number 3, a mixture of 3 liquid is separated by the fractional distillation.
द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है जहाँ सेपरेशन होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स. नाउ विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1, 2, and 4 statements are given to us. The statement 1 says that the mixture boils at the constant temperature throughout the separation. So that is not a possibility because आप उसको constantly heat कर रहे हैं तो temperature definitely उस mixture का rise करेगा. इसीलिए different boiling points पे आपके different जो liquids हैं वो separate out होंगे. तो that means A point तो आपका point 1 जो है वो आपका incorrect है. The temperature at which the mixture boils increases during the separation. अगर आपने 1 को negate कर दिया तो 2 आपका correct है. The liquid with the highest boiling point, तो आपका एकदम से तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं होगा ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो आपका जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो पहले जो है वो इवेपोरेट होगा और उसको पहले आप कंडेंस करेंगे. सो यू विल बी कलेक्टिंग द लिक्विड विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट. सही है. तो आपके 2 and 4 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. योर आंसर इज डी. Question number 4, a mixture of 4 color dyes is analyzed by the chromatography. 4 color dyes analyzed by chromatography. The result is shown over here. This is your chromatogram. This is the baseline where the mixture spot you're going to place, right? और यहाँ पर ये 4 की बात करें, लेकिन यहाँ spots जो हैं ये आप 3 ही देख पा रहे हैं. ठीक है. तो 4 करने के लिए तो जिस solvent में भी ये particular क्रोमेटोग्राफी आपने परफॉर्म करी है इस पर्टिकुलर मिक्सचर की, तो उसके अंदर ये 3 स्पॉट्स ही सॉल्युबल है. जो चौथा डाई है वो इनसॉल्युबल है. दैट इज द रीजन द फोर्थ डाई इज नॉट बीइंग शोन अप. तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ 4 कलर डाई is analyzed by the chromatography. The result is shown. Let's see what is the question. Which change, they're asking which change will allow the 4 dyes to be seen. How many dyes are we seeing? We are seeing 1, 2 and 3. We are not seeing the 4th dye. So let's see कि हमें change क्या करना है. The measure the RF value of the spots carefully. तो RF value अगर आप carefully calculate कर रहे हैं, measure कर रहे हैं, तो उससे 4th dye का क्या ताल्लुक है? This is the incorrect option. Run the chromatogram for a longer time. तो longer time आप इसको run भी करेंगे तो ये vast इनके बीच में difference vast हो जाएगा. ठीक है. तो वो उससे भी हमें 4th डाई नहीं मिलेगा क्योंकि 4th डाई हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनसॉल्युबल है इन दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट जिसमें क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म हुई है. रन द क्रोमेटोग्राम यूजिंग अ डिफरेंट सॉल्वेंट. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. जिसमें 4th डाई आपका सॉल्युबल हो. यूज द लोकेटिंग एजेंट. लोकेटिंग एजेंट हम तब यूज करते हैं जब आपके स्पॉट्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है कलर डाइज यूज करें, तो ये इनविजिबल स्पॉट्स नहीं है, तो यहाँ हमें लोकेटिंग एजेंट हम नहीं यूज करेंगे. सो आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सी के 3 ये स्पॉट्स जो हैं विजिबल हैं बिकॉज दिस सॉल्वेंट is dissolving these 3 dyes and the 4th one is insoluble. That's why it's not shown on the chromatogram. So we need to change the solvent. Question number 5, a compound X when heated with aqueous solution of compound Y produces a gas that turns red litmus blue. तो red litmus blue का मतलब है यहाँ पर हमारे पास alkaline gas है और alkaline gas जो हमारे syllabus में है वो सिर्फ आपकी ammonia gas है. तो we need to see that what is the method of preparation of ammonia gas. ठीक है. Method of preparation of ammonia gas जो हमने study करी है वो है कि जब भी ammonium compounds when they are heated with alkali, whenever the ammonium compounds they're heated with an alkali, right, we get ammonia gas. We get ammonia gas. So we'll look for this particular combination कि किस combination है ammonia और alkali react कर रहे हैं तो आपको ammonia gas मिल रही है. Y could be potassium hydroxide. Okay, so why we have an alkali? Fine. तो alkali के साथ हमें अब ammonium compound को react कराना है. एसिड को रिएक्ट नहीं कराना, तो सेकंड ऑप्शन गलत होगी. yes, we can have the alkali and we can have the ammonium salt. They both when react together they will be giving us ammonia gas. So option 1 and 2, 1 and 3 should be correct. So that is why we have a correct answer. That's basically B. Coming to question 6, an aqueous solution of zinc chloride is tested by adding reagent. तो जिंक क्लोराइड में या तो कैटाइन का टेस्ट पूछा है या एनाइन का टेस्ट पूछा है. विच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट? नाउ रिएजेंट एडेड टू जिंक क्लोराइड
observations. Let's see. The aspide aqueous barium nitrate gives you white precipitate. तो ये टेस्ट ट्रू होगा अगर हमारे पास सल्फेट एनायंस हैं. तो ये टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर या तो जिंक आयंस होंगे या क्लोराइड आयंस होंगे. तो क्लोराइड को ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा. aqueous ammonia with, if we test zinc chloride with aqueous ammonia, white ppt forms. ठीक है, white ppt forms, or they will be giving you the these white ppt will be solvent in excess of the reagent. That's basically your aqueous ammonia. So this test is correct for the zinc क्योंकि आपके पास aluminium और जिंक आयंस जो होते हैं वो soluble, they give you the white ppt in aqueous ammonia, but only the zinc ions will be soluble in excess of aqueous ammonia, and aluminium they remain insoluble. तो ये इन दोनों आयंस का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है क्योंकि वो यही दोनों आयंस जो हैं आपको व्हाइट पीपीटी देंगे. तो हमने यहाँ पर इसको कंफर्म कर लिया कि एक्वस अमोनिया के साथ ये दोनों व्हाइट पीपीटी दे रहे हैं, लेकिन जिंक जो है कि अगर आप एक्सेस डालेंगे तो व्हाइट पीपीटी जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं. सो दिस इज कंफर्मिंग आवर जिंक आयन. Now let's see further. Aqueous sodium hydroxide, white PPT in solvent excess of the solution. ऐसा नहीं होता, ये white PPT form करते हैं लेकिन excess में ये दोनों soluble हो जाते हैं. तो this is an incorrect observation. Powdered copper forming a gray precipitate. Again, copper being less reactive will not undergo a displacement reaction. So we have the option B correct in this particular question. Question number 7, the rate of diffusion of carbon dioxide and methane is investigated at two different temperatures, one high and one low. We need to understand that the rate of diffusion depends on two factors, right? So rate of diffusion is directly proportional to temperature, but it is inversely proportional to MR. ओके तो आपका रेट डिफ्यूजन का इंक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन डिक्रीज होता है अगर आपका एमआर जो है वो इंक्रीज होता है. तो लेट्स सी व्हाट इज द एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 and the MR of methane is CH4. So that's 12 plus 4 makes it 16. ठीक है, तो इसका MR आपका 44 है, इसका 16 है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जाहिर बात है आपके मीथेन का जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है, अच्छा अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपका रेट इंक्रीज होगा. तो वी हैव टू लुक फॉर मीथेन ऑप्शंस. तो मीथेन का लो टेम्परेचर आपका रेट इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि मीथेन का हाई टेम्परेचर आपका रेट ऑफ रिएक्शन. ये पूछ रहे हैं कौन सी गैस का डिफ्यूजन रेट जो है वो फास्टर होगा. तो डेफिनेटली द वन विद द लोअर MR and a high temperature. So we have the answer C correct for this particular option. Question number 8, which statement about the atom and ion is correct? Atom के अंदर number of protons and electrons same होते हैं in the case of an atom. And when you talk about the ions, they are the charged particles जिसके अंदर number of protons and electron कभी भी same नहीं होते. ठीक है, understanding this fact, let's proceed with the options. Which atom and ion of the same element must have different number of neutrons. तो neutrons का कोई ताल्लुक नहीं होता यहाँ पर. ठीक है, the atoms and ion of the same element must have a different. तो different तो नहीं होंगे क्योंकि ये atom and ion of the same element हैं, तो definitely उसके अंदर neutrons will remain same. Now moving on to the B part, isotopes of the different elements must have a different number of neutron. So that is again irrelevant to this particular part. The change on a positive ion, the charge on the positive ion is equals to the nucleon number, which is basically atomic mass. What is atomic mass? Atomic mass is basically the sum of protons and neutrons. If you subtract the number of neutrons for this, what you will be left with? Will be left with number of protons. And when you subtract the number of electrons from that, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है. अगर आपके पॉजिटिव आयन फॉर्म, अगर आपके पास पॉजिटिव आयन है तो ये याद रखिए उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
एंड अगर आपके पास नेगेटिव आयन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है तो जो प्रोटॉन्स हैं उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम मस्ट बी सेम, ये कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ मिसमैच, देयर इज दे ऑलवेज they can be different and they can be same too. Coming to question number 9, the bonding of the molecule of carbon dioxide can be represented by a dot and cross diagram. Which diagram is correct? Now, carbon dioxide is formed because of the covalent bonding. और यहाँ पर सारे के सारे इन्होंने covalent ही structures show करे हुए हैं। अब carbon dioxide will be forming a covalent bond in this particular way, where the carbon will be sharing 2 electrons with each of the oxygen atom। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका जो रॉड स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो एक कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है 6 होती है। दैट मींस देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स which are not involved in the bonding. So according to that, I think the A is the correct answer, where carbon has got its 4 electrons sharing 2 each with each oxygen, and oxygen has got its 6 electron, where 2 and 2 4 are not involved in bonding, but the other 2 are involved. So this is the correct answer, which is basically a depiction of this. In the rest of the options, there is a incorrect number of electrons or incorrect number of sharing electrons are being shown. Question number 10, which statement about the structure of bonding of metal is correct? So they are talking about the metallic bonding. Metallic bonding जो होती है, that is basically it's a bonding which is either in metals or it is a bonding which take place in alloys. अब इसमें होता क्या है metallic bonding के अंदर कि जो आपके जो metals होते हैं, they except for mercury they all exist in the solid state। तो इनके जो particles होते हैं वो बहुत ही closely packed together होते हैं। ठीक है, तो दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के साथ साथ उनका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली वाइब्रेशनल मूवमेंट। ओके, इनका जो मूवमेंट होगा इन पार्टिकल्स का वो वाइब्रेशनल मूवमेंट होगा। अब इस वाइब्रेशन की वजह से होता है क्या है कि दे आर ऑल्सो द मेटल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इसकी इन ऑल दीज थिंग्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इन सब फैक्टर्स की वजह से क्लोजली पैक टुगेदर है, वाइब्रेशनल मोमेंट होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो होता क्या है कि आप इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेड कर देते हैं, जो भी ये एटम्स हैं जो क्लोजली पैक टुगेदर हैं, और इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इन जो है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। अब ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, they act as a glue, they act as a rubber band। और इन कैटाइंस को जो सेम टाइप ऑफ जिनके ऊपर चार्ज है, अब सेम टाइप ऑफ चार्ज की वजह से क्या होंगे, रिपेल होंगे। लेकिन ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन विच आर एक्टिंग एज अ ग्लू, ये इनको बाइंड करके रखेंगे। तो दिस काइंड ऑफ अ फोर्स विच डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑन द कैटाइन इज बेसिकली द मेटालिक बॉन्डिंग। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन and in order to opt for the correct option, we need to understand what is metallic bonding. So metallic bonding is basically a bonding is an electrostatic force between a cation and between a delocalized electrons. Now, once we understand that what is metallic bonding, we can easily pick the correct option. A metal lattice consists of a negative ion? No, they consist of a positive cation in a sea of electrons. So this particular phrase is wrong. Electron in the metal move randomly through electrons in a metal move randomly through the lattice. Yes, these are basically your mobile electrons. These are delocalized electrons. They are moving randomly throughout the lattice because they are mobile. They are not bonded to any one particular atom. The metals are malleable because the ions are present, because the ions present are mobile. Ions are not mobile. They are being glued. They are intact with by the delocalized electrons. So that's wrong. The ion in the metal move with the when the positive and negative electrodes. So ions are not mobile. So that is again the wrong concept. So for this
Question number 10, we have the correct answer. That's B.